Good evening, students. Now, the next second part is going to be started, and this second part is most important also. First chapter, molecular basis of inheritance. First question, explain double helical structure of DNA with diagram. Second, what is the Chargaff rules? Chargaff rule is also very important. Here's the Chargaff rule. What is Griffith experiment? That is also important. And here the Griffith experiment is coming on the rat, so you have to go for it. Explain Hershey-Chase experiment. Hershey-Chase on bacteriophage is also very important, and read and write it carefully. It is also very good. And the next one, process of DNA replication, transcription and translation, stepwise. Next, genetic code and its features. These are the genetic codes and features. And the next one is Melson and Stein experiment. So Melson and Stein experiment is this one, that DNA is going to form a hybrid and light hybrid formed, and how the 20 minutes and 40 minutes work is going on. So read it separately. Explain human growth hormone and its goals. That is important. HGP, human growth hormone, HGP, how it is important. Next question, DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, you already know how to extract the DNA and form a fingerprinting part. It's a really important part. Write about the lac operon and its genes, means how the genes are going to be described and what type of the protein are formed from these genes. That is very important. So I put the image of a lac operon here, and promoter, operator, side and work, you have to see, you must need to see that in a proper way. Very important. Now the next chapter is going to be loading. The next chapter is evolution. In evolution, the most important is homologous and analogous organ with example. So what are the homologous organ and what are the analogous organ? You must have to see. The second question is, what explain Miller experiment? Very most important. So Miller experiment के ये जो पूरा structure है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप बहुत आराम से देखना, और वाई दिस एक्सपेरिमेंट हैपन, और इस एक्सपेरिमेंट का मेन यूज़ क्या है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इंडस्ट्री की वजह से क्या फ़र्क आया और क्या चीज़ अडेप्टिबिलिटी हुई, ये सारी चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, इट्स नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ विद न्यूमेरिकल. तो हार्डी-विंगबर्ग लॉ एंड हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल का एक फिगर है यहाँ पर, एंड यू हैव टू गो थ्रू इट बाय दीज स्टेटमेंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू यू इज डिस्क्राइब अडेप्टिव रेडिएशन. इसमें दो तरीके के, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटर मार्सुपियल्स, इन दोनों को आपको देखना है कि हाउ दे अडेप्ट एंड वाई दे आर इन सम चेंज. इसमें एक और बीक ऑफ अ बर्ड, दैट इज़ बाय चार्ल्स डार्विन, ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आता है वो मोस्टली ये वाला आता है कि डार्विन थ्योरी और उनके ऑब्जर्वेशन गैलापागोस आइलैंड में क्या है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन एवोल्यूशन, ज़रूर पढ़ लेना, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस वगैरह. So, human health and disease, the next chapter is, and the first question, explain all the disease, its causative agent with symptoms. सभी डिजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना. इसके बाद फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बिल्कुल कहते हैं ना कंठस्थ याद करना है, वो इस तरीके से याद करना है आपको, फुल लाइफ साइकिल, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल. थर्ड क्वेश्चन इज़ इम्यूनिटी और उसके टाइप्स, एक्टिव, पैसिव, इनेट वगैरह वगैरह जितने भी हैं. आफ्टर दैट एंटीबॉडी का डायग्राम और उसके बारे में एक्सप्लेन करना हो सकता है.
राइट अबाउट एड्स, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और एड्स का क्योर क्या है, कैसे टेस्ट किया जाता है, ये सब क्वेश्चन। एक्सप्लेन अबाउट अ कैंसर एंड इट्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजेज और ट्रीटमेंट। और ड्रग्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, और उसके क्या एब्यूज़ हैं, इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एड्स के बारे में पढ़ लेना और इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी थर्ड पार्ट में मैं और चीज़ें भी बताऊंगा, तो टू बी कंटिन्यूड है।